अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइनेमेटिक्स चैप्टर के MCQ सॉल्व करते हैं। मेरा नाम इबादुर रहमान है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। क्वेश्चन नंबर वन हमसे कहता है द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ द कार वेरीज विद टाइम। व्हाट या विच स्टेटमेंट about the acceleration of car between 10 second and 20 second is correct. So as we know that this is the speed time graph, it means that we have speed on y-axis and time on x-axis. So between the time 10 second and 20 second, so the acceleration will be zero because the speed is constant. If the speed is constant, it means that the magnitude of velocity is constant. So the definition of acceleration is rate of change of velocity. According to this, according to the definition of acceleration, so we can say that acceleration is zero between 10 second and 20 second. So question number 2 हमसे कहता है a student walks at a constant speed and he takes 100 seconds to walk 160 paces. The length of each pass is 0.8 meter. How far does the student walk in 50 seconds? तो सबसे पहले उसने हमें सवाल में बता दिया है कि he takes 100 seconds to walk 160 paces और for each pace the distance is 0.8 meter. It means that one pace is equal to 0.8 meter. ठीक है, तो हमें 80 paces का डिस्टेंस चाहिए बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो टाइम है 100 सेकेंड है और 160 पैसेज है। व्हेन वी डिवाइड बाय 2 50 सेकेंड में हमारे पास 80 पैसेज होंगे और हमें मालूम है कि ईच पैसेज 0.8 मीटर, तो 0.8 मीटर को हम 80 पैसेज से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 64 मीटर डिस्टेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। As the next question number 3, a student dropped from rest a tennis ball in air. What happens to the velocity and to the acceleration of a ball during the first few seconds after release? So obviously, after first few seconds, the velocity will increase when the ball drops. So due to the gravitational force, the velocity of the ball increase. So change in velocity, the rate of change in velocity is acceleration. So acceleration will also increase. So both option D is the right answer when velocity and acceleration both will increase. So question number 4 is very interesting. A cyclist take ride lasting 25 seconds. A diagram shows how her distance traveled from the starting point varies with time. So we have the distance time graph. Y-axis we have distance and on x-axis we have time. So the graph shows here the distance, the gradient of the distance time graph shows that this is the velocity. So this line actually हमें state करती है about velocity, ये speed. So distance time graph हमें हमेशा ये line हमें speed बताती है और वो हमसे पूछता है व्हाट इज हर स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर द होल राइड। एवरेज स्पीड हमें मालूम है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये 0 से लेके 150 तक जाता है वाई एक्सिस पर और 0 से लेके 25 तक जाता है एक्स एक्सिस पर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 150 मीटर एंड द टोटल टाइम टेकन इज 25 सेकेंड। हम इस बात को भूल जाते हैं कि बीच में इसकी वेलोसिटी 0 रही और जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट था वहां पर स्पीड इसकी 0 होगी। तो हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम एवरेज स्पीड की तरफ देख रहे हैं। तो एवरेज स्पीड हमें मिलती है 25 से जब 150 को डिवाइड करते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। सो द राइट ऑप्शन इज ए। अगेन क्वेश्चन 5, a car begins to move. It speed up until it reached a constant speed. It continued to travel at its constant speed for the rest of the journey.
So what happens to the acceleration and what happens to the velocity of the car during the journey? So during the journey, both acceleration and velocity will change. क्योंकि हमने जो मोशन स्टार्ट किया, the car begins to move, उसने मूव करना शुरू किया, it means it is in the state of rest and it begins to move, so it speed up and its velocity will change and its acceleration will also change during the whole journey. So another interesting question is question number 6. Question number 6 हमसे कहता है an object travels at constant speed of 10 meter per second for 10 seconds. तो ये इसकी कांस्टेंट स्पीड है. ऑन वाई एक्सिस वी हैव अ स्पीड एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव अ टाइम. सो ये कांस्टेंट स्पीड फॉर 10 सेकंड, यहाँ पर 10 सेकंड हमारे कंप्लीट होते हैं. तो यहाँ तक जो इसकी स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है फॉर 10 सेकंड. सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 सेकंड इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड. तो इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आती है, कांस्टेंट लाइन हमें मिलती है. स्पीड टाइम ग्राफ पे जो हमें ग्रेडियंट मिलता है, which shows that there is acceleration. So this constant line shows the constant acceleration or uniform acceleration to 20 meter per second. अब हमें मालूम करना है what is the total distance traveled by the object. So very simple is the speed time graph. So area under the velocity time graph or the speed time graph shows the total displacement or the total distance traveled by the body. So हम क्या करेंगे कि हम इसको दो उसमें डिवाइड कर लेंगे. जो हमारे पास इस तरह की शेप्स हैं जिनका एरिया हमारे पास इजीली अवेलेबल है, तो हम उनमें डिवाइड कर लेंगे. तो ये हमारे पास बॉक्स है, इसकी ये बॉक्स रेक्टेंगुलर है और ये ट्राइंगल है. तो ट्राइंगल की जो हमारे पास बेस है वो 10 से 15 यानी 5 है, और जो इसकी हाइट है वो 10 से 20 10 है. ठीक है. और हमें मालूम है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है. एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ बी क्रॉस एच, और हाफ बी है हमारे पास 10 और बी है सॉरी एच जो है हमारे पास 10 है और बी हमारे पास 5 है बेस. तो ये हो जाएगा 25. और दूसरा एरिया किसका है, रेक्टेंगल का एरिया है. रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि हम लेंथ को मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं. तो लेंथ हमारे पास 10 है और विड्थ जो है 15 है. 10 मल्टीप्लाई बाय 15 हम कर देंगे, तो यहाँ से हमें 150 मिल जाएगा. 150 को आप 25 में ऐड करें तो टोटल एरिया हमारे पास हो जाएगा 175. 175 इज द टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस वेलोसिटी और द स्पीड टाइम ग्राफ. तो यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है a lorry takes 15 minutes to travel along the path PQRS. What is the average speed of the lorry? तो 15 मिनट उसने लिए इस जर्नी को कंप्लीट करने में, और टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है P से Q 8 था, Q से R 3 है, R से S 5 है. तो 5 प्लस 3 8 and 8 plus 8 is 16 किलोमीटर. हमारे पास 16 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस. और टोटल टाइम इज 15 सेकंड. तो 15 सेकंड को हम मिनट आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 15 डिवाइड बाय 60 करेंगे. वहां से हमें 0.25 आवर मिल जाएगा. टोटल डिस्टेंस हमारे पास 16 किलोमीटर है. टोटल टाइम जो हमारे पास है वो 0.25 आवर है. तो 64 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ लॉरी. क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है a time t1 at time t1 spoon is dropped. स्पून ड्रॉप्ड होता है फ्रॉम स्टेशनरी बलून, एक स्टेशनरी बलून से. और कहता है a spoon reach terminal velocity at the constant velocity when the weight of the spoon is balanced by the air resistance at time t2. So which row gives the acceleration of the spoon at t1 and at t2? So obviously at time t1 when the spoon is dropped, so the acceleration of the spoon is 0, and after achieving the terminal velocities, acceleration becomes the gravitational acceleration of on the earth, which is 10 meter per second square. So 0 is acceleration at t1 and 10 is the acceleration at 10 at t2. So the right option is C. अगेन हमें क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ द
car traveling in a straight line change with time. Which section shows the largest acceleration? कौन सा सेक्शन हमें लार्जेस्ट एक्सेलरेशन बताता है? ए सेक्शन को अगर हम देखें और बी सेक्शन को देखें और सी सेक्शन को और डी सेक्शन को, तो सी सेक्शन हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड है. इफ द स्पीड इज कांस्टेंट so the magnitude of the velocity is constant. If the magnitude of the velocity is constant, it means that the acceleration is zero. So b हमारे पास जो शो कर रहा है वो स्मॉल एक्सेलरेशन चेंज में शो कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल एंड स्मॉल ग्रेडियंट. और ए हमारे पास जो है वो स्टीपर लाइन है, उसका ग्रेडियंट ज्यादा है. सो द ग्रेटर द ग्रेडियंट द ग्रेड लार्जर विल बी द acceleration. So the right option is A. So in the short time, in a very short time, it covers it accelerates with more velocity. So the right option is A. Question number 10 हमें बताता है an object falls from the rest through the air and air resistance on it increases. The object reach the terminal velocity. Object जो है वो terminal velocity पर पहुंच जाता है. Which quantity decrease until its terminal velocity is reached? तो कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज होगी? सो इट्स स्पीड, ये एक स्पीड से शुरू करेगा, यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी. इनिशियली इसने यहाँ पे जीरो थी, फिर इंक्रीज होते होते इसकी कोई स्पीड थी, और फिर वो स्पीड उसकी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और कम होते होते एक कांस्टेंट स्पीड तक वो उसे अचीव कर लेगा. उस कांस्टेंट स्पीड को जब व्हेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड बाय when the weight of the object is balanced by the air resistance, एयर रेजिस्टेंस के साथ बैलेंस होगा, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे द टर्मिनल वेलोसिटी. सो द स्पीड इज अ क्वांटिटी व्हिच डिक्रीजेस. ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज सी. Again, the question number 11, an object falls from rest through the air, its velocity increases until it reaches the terminal velocity. Which quantity increase until its terminal velocity is reached? So obviously air resistance is increases. So question number 14 हमें कहता है a car travels along a road 650 km per hour. A driver applies the same braking force at the same place on a day when the surface is dry, and then on a day when the road is wet. So on the wet surface, how many of these distance are greater than on the dry surface? So when you apply the brake on the wetty surface, your stopping distance will increase. On the wetty surface, the brake, when you apply the brake, your stopping distance will increase. On the dry day, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ ब्रेक लगाते हैं तो ड्राई डे में कार यहाँ पे स्टॉप होगी और वेट डे में यहाँ स्टॉप होगी. सो द स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उसका वो इंक्रीज होगा और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. बोथ डिस्टेंसेस विल इंक्रीज. सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ फॉलिंग स्काई डाइवर, and as he falls and the skydiver spreads out his arm and legs and then open his parachute. So which part of the graph shows the skydiver falls in with the terminal velocity? So when the speed of the paratrooper will decrease and when the air resistance will be balanced by the weight of the body paratrooper, so at this point the terminal velocity we will he achieved the terminal velocity which is a constant speed. So in the D region we have a terminal velocity, a constant region.
So the total distance, it means the diagram shows the speed time graph of a motion of a car for 4 seconds. So what is the distance traveled by the car in the 4 seconds? So you will need to, similarly, you will need to just calculate the area under the curve, and you will get the the base multiply by height divide by 2. So, and uh, you will calculate the area of this rectangle by 10 multiply by 10 is the length multiply by width, 10 multiply 1, which is 10, and you will get the average of this the 4 multiply by 10 divided by 220. So we'll get the 30 meter is the total distance traveled by the car in 4 seconds. So this MCQ is related to the area under the curve, area under the speed time graph, which is equal to the total distance traveled by the object. So question number 17, an object moves from P to Q in 10 seconds with uniform acceleration. So velocity at P is 5 meter per second, velocity at Q is 12 meter per second. So what is the acceleration? So this is a very simple question, and you have the two velocities at different points. The initial velocity is 5 meter per second, and your in acceleration or the velocity increase, your velocity will become 12 meter per second in 10 seconds. So the difference of the velocity between P and Q is 7, and the time taken is 10 seconds. So 7 divided by 10 is 0.7 meter per second square is the acceleration of the object. The right option is B. So again, we have question number 19. A speed time graph represents the journey of the car. The dots separate different section of the journey. There are 6 different sections. How many sections represent the car moving with the non-uniform acceleration? Obviously, the constant velocity we have acceleration is 0, and the constant velocity, the constant increase in the velocity and the uniform acceleration. So this is the constant line which shows that the acceleration is in, and this shows that acceleration. So these two sections shows the non-uniform acceleration, and these two sections are shows the uniform acceleration or deceleration. So question number 28, which vehicle has an acceleration of 5 meter per second? And the right option is motorbike when it speed change from rest to 50 meter per second in 10 seconds. So from rest, it means that the initial velocity is 0 and the final velocity is 50 meter per second. So 50 minus 0 when divided by it from time 10 seconds. So 50 minus 0 divided by 10 is 5 meter per second. The right option is D. So question number 29, a graph shows part of the journey made by the cyclist. So cyclist ये 4 पे हम देखते हैं और फिर यहाँ से वो यहाँ तक यू मूव करता है, तो एरिया अंडर द कर्व अगर हम कैलकुलेट कर लें, यानी एक हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा और एक ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा. ठीक है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये लाइन नहीं, ये रेक्टेंगल बन जाएगा और ये ट्राइंगल बन जाएगा. तो ट्राइंगल जो है उसकी हाइट 2 है और बेस है, यहाँ से यहाँ तक हम उसकी बेस कैलकुलेट कर लेंगे. सो द ग्राफ शोज द जर्नी बाय द हाउ फार डिड द साइक्लिस्ट ट्रेवल इन 7 सेकंड. तो हमने 7 सेकंड तक ही कैलकुलेट करना है, तो इस वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं और 7 तक कैलकुलेट करना बहुत आसान है. 0 से 7 हो जाएगा और ये हमारे पास 4 हो जाएगा. तो 7 4 is 28. तो राइट ऑप्शन इज 28. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.